Yes, Dhiren sir. Hello, sir. Good morning. Sorry, I think I realized that I disturbed you a bit earlier and you joined in, and there was another Shamapna webinar which was going on for Mumbai Sangh. I was trying to just help them with No problem. Are you able to hear me clearly, sir? Sir, you're looking smart, able to hear you perfectly, brilliant. So today I have joined from my laptop. Excellent. Wonderful, sir. I hope I don't cough during the proceedings. Still, it is fine. Even if it happens, it is natural. So no issues at all. But is my voice okay? Is it clear? Is it better? Your voice is music to the ears. No, sir. Thank you very much. We have a few colleagues which have also joined us. I guess it is live streaming to them. So I think we'll have some wait part. I think it should start and thereafter we join. Yeah. Wonderful, sir. So I'll switch off my video now. Perfect, sir. जय सर। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, लाइट अरेंजमेंट वगैरह ठीक है साहब या कुछ? Perfectly fine. If the sound can be a bit louder, I think it is fine. Otherwise, positioning perfect. हाँ, साउंड मैक्सिमम जो था वो कर लिया वॉल्यूम मैंने। ठीक है, आप थोड़ा सा पास में रहेंगे। I think we'll be able to। जी जी, इससे और थोड़ा भी तो कर ज़्यादा हो जाएगा।
Perfectly fine, sir. Thank you. Yes. I can have some more light on my face. Just a minute. अरे सुनिए तो वो एक छोटा लैंप लाइट है ना जो उस दिन लगाया था ऑटोमेटिक लाइट जो है वो छोटी लाइट Vishal, I think this is a wrong slide. I think you go back to the earlier one. So welcome everyone. Welcome to the seventh session of Forum of Professionals, Jain Ratna Forum of Professionals. It's a pleasure to have all of you again for the seventh session. The feedback on the sixth session has been tremendous and all of you have loved it. Thank you very much. हम पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का पावन दिवस सेलिब्रेट करके क्षमापना के करके पहला सेशन है। आप सभी से मैं सुनना चाहता हूँ वर्ष भर में मन वचन काया से कोई भी दोष लगा हो, कोई भी कारण हुआ हो, उससे बारंबार खमत खामना मिच्छामि दुक्कडम हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज का विषय बहुत स्पेशल एंड वेरी डियर टू माय हार्ट। Justice looks very simple, but and we do think the authority is in the hands of the judge, but I can tell you it is the most difficult job for the judge. Today we have Kothari Saab, who would have done almost thousands of cases, and we have Surana ji, who has represented thousands of them across the world. But before I start on that, I go with our sacred Jain text Tattvartha Sutra, which reads that right faith, right knowledge, and right conduct together constitute the path to liberation. ये पहला सूत्र है, ये पहला श्लोक है, which guides us, I think, what life is all about. मोक्ष मार्ग में तीर्थंकर भगवान ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को आत्मकल्याण के साधक माना है, और उसमें सबसे पहला है ज्ञान, फिर दर्शन, चारित्र एंड तप which gets added. Jain text also mention knowledge in 5 kinds. They generally say that it is a sensory knowledge, scriptural knowledge, telepathy, omniscience, etc. And there's a lot of focus on mati and shrut, so what we hear, what we record, what we see, and mati. But it includes all the mediums through which we directly, I think, consume, or even without any medium. In justice, I generally call that the karmic veil on soul is very, very important, and a few principles which we have been taught of Syadvad, Syadvad ka Siddhant, which is a systematic methodology to explore the real nature of reality and consider the problem in a non-violent way from different perspectives. And the entire process has 7 different conditions and steps. I would like to repeat that because I call that is the heart which combines Gyan, Darshan, Tap, and then I think the Charitra part. We call it Syad Asti, which is in some ways means it is, Syad Nasti, which means it is not. So you understand what it is not. It also says Syad Asti Nasti, which means in some ways it is and it is not. The fourth is Syad Asti Avatatva, which is in some ways it is and it is indescribable. So I think you can't describe it, and that's where, but it does exist, but you are not able to describe it.
Syad Nasti, which is the opposite of Asti, which says in some ways it is not, and still it is describable, indescribable. So I think it is not, but you are not able to describe it. It is, but you are able to describe it. And Syad Asti Nasti Avaktavya. It means in some ways it is, and it is not, and it is indescribable. The last one, the seventh one being Sad Avatakve. In some ways it is indescribable, which means a judge, when we says, goes through all these seven conditions, either after the facts are put up, right, wrong, good, bad, uh, what is just, has to be done through a lens, which I explained to you, the seven unconscious lenses. Um, I think I have a pleasure to have Kothari ji with us, who has been seeing all this, I think, across. Uh, I do ask him at times that how easy and how difficult it is. He makes it look easy, but I can tell you that I call it is one of the toughest jobs to ever have, when you have so many learned people presenting their perspectives. You then apply your thought, then you have a judgment. The judgment is favor of one and not favorable to another generally. And the other person has to feel equally good that it was a just decision which was done for them. Um, Vineet Kothari, a judge from Madras High Court, is a senior most judge there. I think he's decided almost 40,000 plus cases, and across high courts of Rajasthan, Karnataka, Madras, and on civil and tax laws and criminal, all of them. He had contributed for national and international papers across, and addressed various conferences on international taxation, allied subjects, and an honorary director of the board of International Association of Tax Judges, which is IATJ. He's also a member of CMGA London, which is the, I think it's a pride for us to have him amongst us and share his thoughts, his perspectives with all of us. Vineet Kothari, Saab, thank you very much for accepting our request and addressing us. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, Bhandari Sahab. It's an honor and privilege, and very happy to be part of this webinar. I'm grateful to Akhil Bharatiya Jain Ratna Hitashi Savak Sangh, and especially Ratna Sangh Forum for Professionals, which is a body of high intellectuals. And being a Jain, I think I can't claim anything about knowing the Jainism to a very big extent or in depth. But yes, कुछ संस्कार जो शुरू से हैं वो माता पिता ने दिए हैं, परिवार ने दिए हैं. मैं आभारी हूँ सर्वप्रथम ऑनरेबल टाटिया साहब का जो साहब थोड़ा सा तेज रिक्वेस्ट आ रही है. अच्छा, ठीक है. I'm sorry. ठीक है. Yeah. Let the lawyer in me arise. I think the voice will become louder. Okay. Yeah, I hope I'm properly audible. And I was expressing my gratitude to Honorable Justice Prakash Tatia Sahab, former Chief Justice of Jharkhand High Court, then Chairman of Armed Forces Tribunal, then Chairman of Human Rights Commission, such a high dignitary of your Sangh who is president there now. And I have been beneficiary of his blessings right from beginning of my lawyering days, about 35 years back. And he is a good friend of my elder brother also. So I was always been very lucky and happy to be part of his family. And we were members of the same common tea club of lawyers, which produced many judges. And he was the star of that club. And very happy that Mr. Vinod Surana, whom also I know very closely, is a part of this. Mr. Shekhar Bhandari, a very high position in Kotak Mahindra Bank. So many professionals are associated with this webinar. Though I have conducted many webinars and delivered many lectures, but when you combine justice with the tenets of Jainism, Darshan, Gyan, Charitra, Darshan, I felt slightly nervous in the sense that
what to say, I can't speak with any amount of modicum of authority on Jainism, because whatever basics I've been following of Jainism, I think I'm very beginner of that, and therefore please excuse me if I can't say anything with any amount of authority kind of thing about Jainism. But yes, the basic principles which we apply in judiciary, I'll be talking about that, so that how, with particularly reference to Indian judiciary, I'll try to throw some light with my own experience and the judiciary as a whole, right from Supreme Court to the bottom civil judge in the country, and how the principles, if forgotten or not applied, can cause troubles, and if applied and if followed, can cause real justice, because people hardly know the fine difference between justice and law. In our scheme of things, the High Court and Supreme Court are called courts of justice, as against the subordinate courts which we call, right from civil judge to district judge, they are courts of law. So our duty in the constitutional courts, in High Court and Supreme Court, is little higher, with a greater vision we work. And the difference between law and justice is, though fine, is of very significant character. Because while working as a court of law, you are bound by the statutory law which governs the case. But while you work as a constitutional court, as a court of justice, you have a little more, I mean, not little more discretion and power to mold even the law. The constitutional courts have even the power to strike down a law which is, in their opinion, reasoned opinion, is unconstitutional, or is arbitrary, or is against the basic tenets. Now, basic tenets in our Indian constitution and laws also are broadly based on the principles of Jainism, I would say. Now, how, I would like to explain in little more detail. While we say darshan, gyan, charitra, darshan, gyan, charitra, tap, all these four tenets of Siddha Chakra, if we all see, are the basics of a good human life. After all, we believe in recycle of births and karma satta. And our karmas, debit and credits of those karmas, decides our fate of this life as well as next life. एंड 84 लाख योनियों की जो बात हम करते हैं, तो ये सब इस पे अगर फेथ रखते हुए आप जस्टिस सीख करते हैं या जस्टिस डिस्पेंस करते हैं, तो एक बहुत अलग तरह की जस्टिस और अनुभूति आप लोगों को दे सकते हैं. यहाँ हमें मेरे ख्याल से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और जस्टिस में भी फर्क समझना चाहिए. Dispute resolution is something at a far lesser pedestal. If you decide a case, if you simply decide a property right or a right of a person to do something or not to do something, or even if the action is against the state, whether you hold that the action of the state is wrong or illegal or against the statutory provisions, that is called dispute resolutions. You may have all over the world, also in India also, different ways of dispute resolutions. It can be through court litigation, it can be through alternative dispute resolution mechanism like arbitrations or mediations, things like that. But the real justice, in my humble understanding, is achievement of happiness or peace. So the resolution of the dispute, if it does not lead to happiness or peace of mind between the parties or around them, then it is not justice. Then it is only a dispute resolution according to law. And there you find the difference between dispute resolution and dispensation of justice. This fine distinction in all over the world again should work on the basic tenets of Jainism. That is the highly and most desirable objective which we all should strive to achieve. Now I may tell you how we can do it. Now the main thing is why there is a dispute at all. Sometimes I feel that court system or litigation system or the parts of that legal system, including the lawyers and judges,
We are perhaps, with great humility I am saying, the most unproductive organs of the society. We should not have been there. But we are there perhaps because we are either necessary evils or because the world needs peace through dispute resolution and justice dispensation through us. So ideally speaking, if the principles of or the tenets of Jainism would have been followed by all concerned, the need of court and police administration would not have been required at all. But that is ideal situation. Unfortunately, in Kali Yuga, we are sliding down the hill on the other side. Now, in this era when we are living here, we are all human beings. What is our role? What is our duty? What is our thought process we should try to prevail in the system so that जो दुख और तिर्यंच जो नरक समान स्थिति कलयुग में है या होने वाली है या हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, स्टैम्प कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। इसलिए आज के युग में मेरी विनम्र मत में और ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम जैनिज्म के प्रिंसिपल्स की तरफ मुड़ें, स्वयं भी और लोगों को भी मोड़ें। परोपकार क्या है? आप अगर दूसरे को सम्यक ज्ञान दे सकते हो, खुद का सम्यक चारित्र रखते हुए दूसरे को सम्यक चारित्र के बारे में बता सकते हो, सम्यक तब आप स्वयं कर सकते हो अपना चारित्र मेंटेन करते हुए, तो ईश्वर का, भगवान का दर्शन होगा, भगवान के नजदीक जाओगे, आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। ब्रॉडली स्पीकिंग जैनिज्म हमें यही सिखाता है। आज हो क्या रहा है, हम जो सो कॉल्ड जैन हैं, 40-45 लाख इंडिया में समझ लीजिए, 4-5 लाख वर्ल्ड में बाहर समझ लीजिए, जो जैनिज्म अफगानिस्तान से लेकर के चाइना तक आज से 2-2.5 हजार साल पहले था, भगवान महावीर के समय या उसके कुछ समय बाद, धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ सिर्फ हिंदुस्तान में रह गया है। और हिंदुस्तान की भी एक बहुत माइनॉरिटी आज हम कहलाते हैं, हमको माइनॉरिटी स्टेटस गवर्नमेंट ने हाल में दिया है, तो 1-2% हैं हम लोग। अब इस 1-2% की जिम्मेवारी मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडिविजुअली स्पीकिंग, लकीली because we have been following those principles, we do not only possess the means and wherewithals for our own mental and other wealth prosperity in that sense, but we have the command over our own respective spheres where we can turn people towards these principles, towards these tenets. हम लोग इंडिविजुअली हीरे हैं, डायमंड्स हैं, पर हमारी हीरे की माला बननी बाकी है। हम लोगों को जुड़ना बाकी है। जैसे कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं तोड़ सकता, भाड़ नहीं फूंक सकता, वैसे हमको संगठित होने की बहुत आवश्यकता है। और हमें हमारे आचार्य श्री लोगों ने, गुरुजनों ने, साधु लोगों ने इस बारे में बहुत अथक प्रयास बहुत समय से कर रहे हैं। अथक, उनका जितनी वंदना की जाए उतना ही कम है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस, श्रावक संघ की तरह आप लोग हैं, रत्न श्रावक संघ है, दूसरे बहुत सारे संघ हैं, तो ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। पर मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में, इस काम को बहुत अधिक तरीके से और बढ़ाना है। उसमें एक मेरी राय जो मैं इस पर विचार कर रहा हूं, जब से आपकी वेबिनार से जुड़ने का मुझे सहयोग मिला और अदरवाइज भी जहां मौका मिलता है, मैं कहता हूं कि जैन समाज के पास सब कुछ है, पर आपने जो काम एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में करना चाहिए था, उससे बहुत कम किया है। एजुकेशन अच्छा सिटीजन बना सकती है, अच्छे संस्कार दे सकती है, अच्छी मॉरल वैल्यूज दे सकती है, अच्छे प्रिंसिपल्स दे सकती है, अच्छे सिटीजन बना सकती है। आज इंडिपेंडेंस के बाद या उससे कुछ समय पहले, जब से अंग्रेजों ने रूल करना शुरू किया, एजुकेशन पार्ट हैज गॉन टू क्रिश्चियंस। When the Muslims ruled, they were just anti against Hinduism and Jainism. They destroyed our temples. They destroyed our literatures. They destroyed us, many of us. But we can't keep on repenting over the past only. Now is the time when we consolidate ourselves and start doing what we have been doing so far in a much bigger way.
एजुकेशन के बारे में मेरी विनम्र राय में जो सजेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, खुद से जो संभव होता तो मैं करता ही हूं और करूंगा भी, कि आप एजुकेशन को एंटरप्राइज के रूप में लीजिए। मद्रास में मेरा सहयोग हुआ कुछ जैन लोगों से जो एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभय जी श्री सीमाल से, कोठारी जी से, कृष्णचंद जी चोरडिया साहब से, प्रोफेसर प्रियदर्शनी जी से। इन लोगों ने बहुत अच्छा जैन एजुकेशन में काम किया है। सुराना फैमिली है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर हम प्रोफेशनल्स, हम बिजनेसमैन, जैन लोगों में जो भी हैं इंडिया वाइड, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्राइमरी एजुकेशन से ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाइए जहां जैनिज्म एक एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा हो। गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो थी अब नई बनाई गई है, कितनी सक्सेसफुल होगी अलग बात है, उसको भी रखना ही पड़ेगा आपको अगर आप कोई स्कूल चलाते हैं तो। पर आप माइनॉरिटी स्टेटस में अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो आपको ये लिबर्टी, आपको ये फ्रीडम है कि आप अपना धर्म भी पढ़ा सकते हैं। वहां आप सिर्फ बच्चों को, जैन के बच्चों को मत लीजिए, आप सभी कास्ट, कलर और क्रीड के बच्चों को लीजिए, क्योंकि जब तक आपका आसपास का वातावरण सही नहीं होगा, आप 40 लाख से भले 80 लाख भी हो जाओगे, आप रहोगे माइनॉरिटी। उस 80 लाख को हमको 80 करोड़ बनाना, तब कोई भारत का नक्शा बदल सकता है, भारत की साइकी बदल सकता है, भारत का विचार विमर्श और तरीका बदल सकता है। जरूरत इस 40 लाख लोगों को 80 करोड़ तक पहुंचाने का है, और ये टारगेट अगले 10-20 साल का होना चाहिए। तो जब तक आप एजुकेशन को एंटरप्राइज नहीं बनाओगे, हम में से हर स्टेट में कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स खड़े नहीं होंगे जो प्राइमरी एजुकेशन, बिकॉज दैट इज द एज वेयर द चिल्ड्रन, कच्ची माटी को आप मोल्ड कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। आज घर के बच्चों के आप संस्कार किस एज में देते हो? शुरुआत में देते हो। तो आप एजुकेशन में अब क्या कर सकते हो? आप अब तो ऑनलाइन का जमाना, हम भी ऑनलाइन से बात कर रहे हैं, हमारे कई साधु भगवंत ऑनलाइन प्रवचन दे रहे हैं। क्या हम उनके प्रवचन को ऑनलाइन बच्चों को नहीं दिखा सकते? क्या लाइव उनको रिक्वेस्ट करके स्कूलों में नहीं बुला सकते? क्या उनके रिकॉर्डेड मैसेजेस प्रार्थना के समय उनको नहीं बता सकते 15-20 मिनट, आधे घंटे, जहां वो अहिंसा की बात करें, अपरिग्रह की बात करें, संयम की बात करें, रेस्पेक्ट फॉर वुमेन की बात करें? ये आज ये शिक्षा, मॉरल एजुकेशन कब प्राइमरी एजुकेशन से गायब हो गए, में पता ही नहीं चला। और हमारे समाज के बच्चे कहां कहां बिगड़ी हुई लाइनों में चले गए। आज जब बुलट के देखते हैं तो दुख और शोक के अलावा बहुत कम चीज रह रही है। शर्म आती है जब मैं ये सुनता हूं कि जैन समाज के बच्चे पब्स में पाए जा सकते हैं, नॉन वेज खाते हुए पाए जा सकते हैं। ये हमारे लिए तो मेरे ख्याल से एक तरह से डूब मरने सी बात है। पर ये जिम्मेवारी हम सीनियर्स की है कि हम ऐसा कुछ व्यवस्था दें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, ऐसा ढांचा बनाएं जहां जैन्स के संस्कार, टेनेट्स को हम अच्छे सिटीजन बनाने में मदद कर सकें। अगर तालाब में पानी साफ होगा तो बाल्टी में साफ ही आएगा, अगर तालाब में गंदा होगा तो गंदा ही आएगा। आपको जस्टिस और कोर्ट ऑफ लॉ और सिस्टम में पहुंचने की आवश्यकता न पड़े, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पहुंचने के बाद कितना जस्टिस हो पाएगा, ये शायद आप सभी से ज्यादा टाटिया साहब और हम लोग बता सकते हैं इस ऑडियंस को, लर्नेड ऑडियंस को भी। पर मैं तो जब कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आता है मेरे सामने, और पर्टिकुलरली अगर जेंट्स का आता है, तो उनका फर्स्ट एडवाइस होता है, प्लीज लुक फॉर द वे आउट ऑफ दिस सिस्टम। वेदर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू बार्गेन, व्हाटएवर, प्लीज गो आउट ऑफ दिस सिस्टम एनी हाउ। कॉम्प्रोमाइज, सेटल बाय पीस, दैट इज द ओनली जस्टिस यू कैन गेट। क्योंकि लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में जस्टिस एक मिराज है, बहुत दूर जाके मिलता है। और वो कब मिलता है? सिविल डिस्प्यूट में तो ब्रदर टाटिया साहब ज्यादा कहेंगे तीसरी पीढ़ी को मिलता है। तो क्या काम का वो जस्टिस बताइए? जिस पीढ़ी ने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू करी तो वो तो देख ही नहीं पाती, दूसरी उसको लड़ाई में पैसे खर्च करके निभा देती है, तीसरे को कुछ मिलता है तब तक उसे पता ही नहीं होता क्या मांगा था और क्या मिला है। तो ऐसी स्थिति में जब हम हैं इस युग में, तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जस्टिस के लिए हम प्रिंसिपल्स को व्यक्ति ऐसा तैयार करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत हो, वो जैनिज्म के प्रिंसिपल्स के सहारे टिका रहे अपनी लाइफ में। वो अगर रहेगा तो जहां तक कोर्ट सिस्टम में मैंने पहले बात कही, वहां न जाना पड़े। अगर जाना पड़े तो जस्टिस के लिए मांग आप अवश्य करें,
उसके लिए आप अपना पक्ष रखें, मजबूती से रखें, कानून के सहारे रखें। और ऐसा नहीं है, अच्छे जजेस की कमी नहीं है, वो भी न्याय दृष्टि से इसको देखते हैं। उन प्रिंसिपल्स को चाहे इन वो नामों से न जानते हो, दर्शन ज्ञान चरित्र तब को, पर बेसिक आइडिया उनका ये रहता है और वो जस्टिस देने में काम करते हैं। एक कहीं चैट बॉक्स में भी मुझे पॉपअप हुआ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ट्रू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। द अदर एक्सट्रीम इज जस्टिस हरीज इज जस्टिस वरीड। हम लोग इन दो एक्सट्रीम पोलर्स के बीच में काम करते हैं। आप जब तक रीजनेबल सुनवाई करके आप फैसला नहीं करो, तब तक आपके लिए फैसले से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। आपको सब कानून भी देखना पड़ेगा, आपको पक्षकारों को सुनना भी पड़ेगा, मौजूद परिस्थिति में क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको देखना पड़ेगा, उसको जजमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सब जस्टिस की न्याय व्यवस्था बहुत बड़ी है। मैं थोड़ा सा डाइवर्स करने के लिए वापस आचार्य श्री को प्रणाम मुझे शुरू में ही करना चाहिए था, अब भी करता हूँ। आचार्य अस्तिमल साहब का उनके दर्शन करने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, पर उनके शिष्यों का एक दो बार मुझे प्रमोद मुनि जी वगैरह से बातचीत करने का मौका मिला। जैन श्रावक संघ के कई लोगों से मैं मिला हूँ और जो व्यवस्था आपके यहाँ है वो बहुत अच्छी है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो जो मुझे उन्होंने किताबों का सेट बैक किया कि उस्वाल साहित्य ये मौलिक इतिहास और पुरुषवट गंध तीर्णम, वो मैं कुछ दिनों से पढ़ रहा था। उसमें एक बात मुझे लगी कि हम संसार में डिटैचमेंट का भाव क्यों रखें। आचार्य अस्तिमल साहब ने बहुत अच्छी बात कही उस पर, और उसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ इस फोरम पर, छोटा सा 3-4 लाइन का, जिससे आपको फिलॉसफी समझ में आए लाइफ की कि क्या हमको कैसे रहना चाहिए इस लाइफ में, कहाँ हम चले गए और कहाँ हमको वापस आना है। पेज नंबर 154 वॉल्यूम 1 पे पुरुषवट गंध तीर्णम में आप पूज्य श्री घासीलाल जी मरासा द्वारा आचार्य श्री के लिए जो एक कोटेशन का और फिर 3 लाइन में समझाया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। असंसारम संसारम वदति सकलो बोधयति नो, बुद्धे बोध्या बुद्ध्या सकल जनता बोधपन पर। यदि ये सदवाक्य स्फुरित महिमा कोप्यानुभव गणी हस्तिमल शशि शमित कलिमल शुभमति। संसार क्या मिथ्यात्व है, ये आचार्य श्री ने समझाया। इस संसार को सब मनुष्य असार अर्थात मिथ्या कहते हैं, किंतु इसके सच्चे तात्पर्य को नहीं समझाते हैं। बुद्धिमान मनुष्यों में ज्ञानी मनुष्य ही इसके सत्य स्वरूप को समझते हैं। जिनकी सद्वाणी में कोई अनुपम महिमा प्रकट होती है, ऐसे शुभ बुद्धि के धारक आचार्य श्री अस्तिमल जी को देखकर कलयुग के पाप स्वयं शांत हो जाते हैं। इस प्रकार अपने भाव बतलाकर आपने प्रसन्नता प्रकट की। जिन आचार्य श्री के दर्शन से ही आपको ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा सम्यक बोध हो सके, वैसे आचार्य श्री का संघ स्थापित जो आप लोगों ने किया है और जो आप चला रहे हैं, उस संघ का हिस्सा होने में आप सब तो गर्वान्वित हैं ही, और हम लोगों को भी जो आपने मौका दिया है उससे हमें भी बहुत गर्व का अनुभव होता है। मैं वापस आता हूं, कुछ स्टोरीज के माध्यम से हम कैसे जीवन को समझें, कैसे जीवन दर्शन को समझें और कैसे न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएं, ताकि इस कलयुग में हम अच्छे सिटीजन ना सिर्फ खुद बन सकें बल्कि आसपास के लोगों को भी बना सकें। एक कहानी मुझे पढ़ने में आई और जो मुझे अच्छी लगी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, छोटी सी। आप कैसे डिटैचमेंट के भाव या सम्यक दर्शन से जीवन में रह सकते हैं। एक राजा के यहाँ मंत्री थे, बहुत अच्छे बुद्धिमान, तो उनको राजा बहुत सम्मान भी देता था, पर कभी किसी बात पे हटा दिया उन्होंने एक बार। ठीक है, हट गए, वो बाहर चले गए। फिर कुछ समय बाद फिर उन्होंने उनको बुलाया, फिर आ गए। फिर समय बाद एक बार फिर किसी बात पे निकाल दिया, चले गए, फिर आ गए। ऐसा जब 2-3 बार हुआ तो लोगों ने उनको कहा, साहब आप ये बेइज्जती क्यों सहन करते हो, आपको क्या जरूरी है ऐसा मंत्री पद बनना, और बार बार राजा जब बुलाता आप चले जाते हो और जब निकालता आप निकल जाते हो, आपको ये क्या तरीका है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जीवन की फिलॉसफी है। उन मंत्री ने कहा, मुझे तो कोई अनुभूति नहीं होती, राजा की अपनी जरूरत है, वह मालिक है, उनकी इच्छा सर्वोपरि। जरूरत नहीं होती तो हटा देते हैं, जरूरत पड़ने पर फिर बुला लेते हैं। मैं क्यों इसका विश्लेषण करूं और समीक्षा करूं। राजा ने जब कभी मेरा सम्मान किया, मैंने उसे अपना सम्मान नहीं पद का सम्मान समझा, और जब कभी मुझे हटाया निकाला, उसे भी मैंने स्वयं से न जोड़कर पद के साथ जोड़कर देखा। इसलिए मेरी राजी नाराजी का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए कितना डिटैचमेंट के भाव के साथ एक मंत्री, जिसका ईगो
या जिसका अटैचमेंट विद द पोस्ट कितना हाई हो सकता था, कितनी सरलता से अपना बाहर आना जाना, अंदर आना जाना सरलता से लिया और अपना काम किया और निकल गए। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसमें, और पुरानी कहावतें भी है, डिस्प्यूट के पूरे संसार में, इसको चाहे वृहद स्तर पर देखिए चाहे हिंदुस्तान के स्तर पर देखिए, हम कहते हैं कि डिस्प्यूट के 3 ही कारण हैं, जर, जमीन और जोरू। 3 शब्दों में सारा डिस्प्यूट का स्ट्रक्चर आता है। मैं एक एक वर्ड को थोड़ा सा आपको एक्सपांड करके बताता हूं, उसका क्या मीनिंग मैंने समझा है, और मेरी समझ में तो डिस्प्यूट इससे बाहर कभी जाता ही नहीं। जर का मतलब ऐसे होता है एज, आयु, पर आप आयु के साथ कुछ उसके कंसेप्ट जोड़िए, जर के साथ एज जोड़िए, सीनियरिटी देखिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखिए, ईगो देखिए। आप अपने को समझते मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा धनवान हूं, मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं समाज में मेरा बहुत स्थान है, मैं मंत्री हूं, जज हूं, आईएएस हूं, आईआरएस हूं। ये सब कंसेप्ट हुआ जर का। जरा से इस पे चोट आई नहीं कि आपकी अशांति हो गई, डिस्प्यूट पैदा हो गया। तो सिर्फ जर को आप 3-4 शब्दों में समझेंगे तो ये एक मुख्य कारण है सारा डिस्प्यूट का, झगड़े की, फसाद का, विवाद का। जमीन, प्रॉपर्टी, लैंड, टेक मूवेबल्स आल्सो, गोल्ड, सिल्वर, व्हाटएवर योर शेयर राइट्स, व्हाटएवर राइट्स। जर, जमीन, जरा से उस पर कोई आहत हुआ नहीं, कोई डिस्प्यूट हुआ नहीं, एग्रीमेंट में झगड़ा पड़ा नहीं, गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया नहीं, नोटिस दिया नहीं, और आप कोर्ट पहुंचे नहीं। सेकंड बेसिक पिलर ऑफ डिस्प्यूट, जर, जमीन और जोरू। जोरू का उर्दू में मतलब होता है पत्नी, पर इसको भी जरा विस्तार से समझिए। ह्यूमन रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये क्या है? आज ह्यूमन से ह्यूमन का कंडक्ट, ह्यूमन से ह्यूमन का रिलेशनशिप, भाई भाई में झगड़ा, भाई पत्नी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, सब झगड़े होते 99% हम 40 साल के एक्सपीरियंस से कह सकते हैं इज बिकॉज ऑफ ईगो। 1% डिस्प्यूट, 99% ईगो। तो इन 3 कंसेप्ट के बाहर कोई झगड़ा जाता ही नहीं है, चाहे उसको आप टैक्सेशन डिस्प्यूट कह लें, चाहे उसको आप ह्यूमन रिलेशनशिप डिस्प्यूट कह लें, चाहे मर्डर अपील कह लें, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कह लें, चाहे सीनियरिटी ऑफ सर्विस जूरिस्प्रूडेंस कह लें, चाहे कुछ भी। तो ये 3 कंसेप्ट में अगर आपका विवाद नहीं करना है आपको, तो आप ये 4 वर्ड अपना लीजिए, ज्ञान, चरित्र, तप, दर्शन। मुझे लगता है, मेरी समझ में, ये दोनों एक्सट्रीम है। एक तरफ विवाद है, एक तरफ डिस्प्यूट है, एक तरफ शांति है, सुख है, पीस है, साल्वेशन है। ये आपको, हमारा काम क्या है, हम समाज क्या है, हम माध्यम है। आपको इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में खुद को जाना, लोगों को ले जाना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपने अपने जैन होने का बहुत अच्छा प्रमाण दे दिया है, बहुत अच्छा काम कर लिया अपने छोटे से जीवन में। हम लोग 60, 70, 80 साल के लिए यहाँ होते हैं, बहुत छोटी यात्रा है। आगे क्या जाके बनेंगे मैं पता नहीं, पर इस 60-70 साल में जो हमने किया है वो अवश्य तय करता है कि आगे जाके क्या बनेंगे। हमें पता नहीं है, पर ईश्वर को पता है। हमें यह भी पता है कि हम अगर अच्छा करेंगे तो शायद अच्छी सदगति मिलेगी। ये तो हमें धर्म ने सिखाया, हमारे आचार्यों ने सिखाया, तो इतना ही मान लें। एक जैनिज्म का कंसेप्ट जो मैं ब्रीफली टच करना चाहता हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी, वो है करुणा, जो अहिंसा से रिलेटेड है, जीव दया से रिलेटेड है। हम क्यों करुणामयी बने, क्यों अहिंसक दिल और मन में बने, शरीर से बने, क्यों जरूरी है? ये वो भाव है, बिल्कुल हमारा जैनिज्म सारा भाव जगत पर बेस्ड है। आपका भाव बुरा तो आप बाहर से कितने भी अच्छे दिखते हो, या अपेरेंटली आप बहुत अच्छा काम करते हो, वो भी उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा अगर भाव खराब है। और अगर भाव सही है, और अगर आप शायद थोड़ा असत्य भी बोल रहे हैं, तो शायद वो इतना नुकसान नहीं करे। तो जब सारी बात भाव पे है, तो करुणा भाव का वो अंश है जिसे हम जैनिज्म को संस्कार के माध्यम से अपनाना है। एक केस मेरे सामने, जब मैं 2005 में जज बना, शुरू में क्रिमिनल साइड का मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं क्रिमिनल बेंच में मैंने काम किया माननीय शिव कुमार जी शर्मा साहब के साथ। टाटिया साहब उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। एक 25 साल के युवा इंजीनियर का बहुत ब्रूटल मर्डर हो गया।
और सेशंस कोर्ट ने उनको डेथ सेंटेंस दे दिया था। उसकी हम अपील सुन रहे थे, तो हमने 2-3 दिन बहस सुनी। तो शिव कुमार जी शर्मा साहब ने कहा तुम नए जज हो, हालांकि तुम टैक्स साइड के और कमर्शियल साइड के जज हो, पर जज बनने के बाद लंबा कैरियर है, सब तरह का काम करना पड़ेगा, तो बहस भी लंबी सुन लिए, आप फैसला लिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं सर, और एविडेंस वगैरह डिस्कस करके सारा बात कर ली। कन्विक्शन तो हमको अपहोल्ड करना पड़ा, बिकॉज एविडेंस बहुत क्लियर थी, सही थी, सटीक थी। पर जब पनिशमेंट का आया तो मेरे को लगा मैं जैन होते हुए मैं डेथ सेंटेंस तो नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने अपने सीनियर ब्रदर से डिस्कस किया कि क्या हम इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मर्डर करने वाला है वो भी एज में ज्यादा नहीं है, तो 14-15 साल बाद छूट जाएगा, 8-10 साल निकल चुके हैं, तो हम किसी को मौत की सजा देने का शायद हमें अधिकार नहीं है। उसने पाप किया है तो पाप का फल और भी मिलने के लिए स्थान है, सब जगह बताए हुए, हिंदू धर्म में बताए, सब धर्म बताते हैं। तो क्या हम इसको एलआई में कन्वर्ट कर दें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट? तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, ठीक है आप लिख दो। तो हमने रीजंस लिखे, और रीजंस में यही लिखा कि भाई ये टू टेक अवे लाइफ रिक्वायर्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, दो एनी मर्डर इज ए ग्रूसम थिंग, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, but he has committed a crime, therefore he deserves to be punished. But there are forms of punishment, so we decide on the punishment of life imprisonment instead of death. So we commuted the sentence. That is how, where perhaps some Jain sanskar, I can say, played a role in my fixing of the punishment on that person. ये हमें सोच, बैलेंस सोच के लिए एक जज के लिए बहुत जरूरी है। और अगर करुणा का भाव आप में है, चाहे आप जैन हो चाहे नहीं, करुणा आपके दिल में हो सकती है। और मैं समझता हूं हर एक आदमी का दिल और दिमाग बेसिकली करुणामयी होता है, उस पे वो आवरण चढ़ा चढ़ा करके उसको कड़ा कर लेता है और कोई दूसरी तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक केस दूसरा मुझे और याद आया करुणा की बात में। एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम कंपनसेशन मैंने तय किया, वो भी राजस्थान में था, जयपुर में मैं तब था। तो एक बच्चे का, 9-10 साल के बच्चे का एक ट्रक एक्सीडेंट से उसका शरीर बीच में से बिल्कुल क्रिपल हो गया, उसके ऊपर से टायर निकल गया, पर वो जीवन उसका बच गया। तो एक अच्छा खासा बच्चा वो ऐसा क्रिपल हो गया कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी कुछ करेगा, पर उस बच्चे की इतनी विल पावर स्ट्रांग थी कि वो उसने धीरे धीरे अपने आप को संभाल करके, परिवार के सहयोग से, कोई ज्यादा अमीर परिवार भी नहीं था, गरीब परिवार था, उसने बीसीए ग्रेजुएशन तक कर लिया। तो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जब हमारे पास एनहेंसमेंट ऑफ कंपनसेशन की अपील मैं सुन रहा था, तो उसमें अशोक मेहता साहब सीनियर काउंसिल है जयपुर में, वो इंश्योरेंस कंपनी के वकील थे, क्लेमेंट्स की तरफ से भी कोई सज्जन रहे होंगे, मुझे नाम याद नहीं। तो हमने डिस्कस सारा करके, हमने को लगा उसको शायद 5 या 7 लाख ही उस जमाने में कंपनसेशन था, 2007 में मिला था। तो मैंने मेहता साहब से कहा, देखिए मैं कंपनसेशन तो मेरी जजमेंट से भी बढ़ा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इंश्योरेंस कंपनी रूटीन में इसकी सुप्रीम कोर्ट अपील करोगे, 5-10 साल वहां निपटेगी नहीं, तब तक इसको पैसा मिलेगा नहीं। तो अगर आप एग्री करते हो तो मैं ऐसा रीजनेबल फिगर तय कर देता हूं जिसमें आपको अपील भी नहीं करनी पड़े और इस बच्चे को जल्दी से इसके पेरेंट्स को कंपनसेशन मिल जाए। तो उन्होंने भी, अच्छे वकील थे, बहुत सुलझे हुए वकील थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ले लिया अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ठीक है 5 लाख आप और बढ़ा दो, 5 लाख के 5 लाख डबल कर दो, जो विद इंटरेस्ट करीब करीब 10 लाख इसको और मिल जाएंगे। 5 लाख तो जमा हो गया, तो वो करीब 10 लाख रुपए उसको एडिशनल एग्रीड ऑर्डर से जब हमने दिलाए, तो उसके पेरेंट्स के आंखों से जो आंसू हमारे कोर्ट में उनके निकले, बच्चा तो आ भी नहीं पाया था, हमने उनको देखा भी नहीं, बट वो जो आंसू थे, वो मैं समझता हूँ वो मेरे करुणा भाव का और मेहता साहब के सहयोग से जो मैं कर पाया, वो आज भी मुझे मुकदमा याद है। 15-20 साल, 15 साल हो गए लगभग उसे, 14 साल, पर वो सेटिस्फेक्शन जो एक जज ले सकता है, कमा सकता है, मैं समझता हूँ कोई भी वकील अगर हजारों लाखों रुपए भी फीस लेके शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकता। तो इस तरह से मैं एक तरह से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज जो आदमी को, इंसान को मिलती है, वो समय पर उसका उपयोग करके अगर वो काम कर गुजरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, तो वो उसका सौभाग्य है, वो कर सकता है और करना चाहिए। इसी तरह बस एक केस का और जिक्र करता हूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का। कहां, जैसे मैंने कहा, कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ लॉ में फर्क होता है। वो करते हुए एक उच्च पद पर स्थित व्यक्ति अपना काम कर सकता है और उसे करना चाहिए। 2 विडो लेडीज का एक केस था, 40 बीघा जमीन उनकी, वो जोधपुर में मैंने तय किया। बहुत प्रेशियस लैंड थी, वैल्यूएबल लैंड थी।
उसको किसी ने कब्जा वब्जा करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करके उस जमीन को हड़प लिया और कहीं आगे से आगे बेच दी। वो SC/ST की लैंड थी, वो विधवाएं जो थी वो SC/ST कम्युनिटी की थी, और सेक्शन ये है कि भाई SC/ST की लैंड आप आगे सवर्ण समाज को नहीं बेच सकते, ये वॉइड होती है इससे। और उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं, और बैच में बैंक का भी इंटरवेंशन हो गया, और ऐसा हो गया कि बैंक की प्रॉपर्टी इस तरह करके उसको बेच दिया। उसकी अपील हमने सुनी, तो मैं आई वेंट टू द रूट ऑफ द मैटर। ये जमीन ओरिजिनल रेवेन्यू रिकॉर्ड बताइए कहाँ थी, किसके नाम की थी। वो तब से वहां निकली, और उनकी तरफ से छोटा मोटा कोई वकील था तो वो कहा साहब मैं तो कह के थक गया कि SC/ST लैंड है, सेक्शन 42 के हिसाब से बैन है, ये लैंड वॉइड, और सब ये लैंड शार्स ने हमारी जमीन हड़प करके आज की तारीख में 3-4 पार्टियां आगे से आगे ट्रांसफर हो गई और कब्जा किसी का ही अलग ही है। तो ये जब आप रूट्स में जाते हो, एविडेंस सब रिकॉर्ड पे होती है, पर आप अपील में आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उस वहां तक पहुंचो और सारे प्रोविजंस और केस लॉस को डिस्कस करके वो 40 बीघा जब जमीन हमने उन विडोज को रेस्टोर कराई अपने फैसले से, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन जो होता है उसका कोई मायने नहीं है। असली मायने में न्याय वो है, था तो सिंपल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पर आप अगर ऊपर ऊपर देखते तो शायद उस तय तक नहीं पहुंचते। आप तय तक पहुंचे तो आपने वो काम कर लिया जो शायद उसके वकील अपनी हैसियत के मुताबिक से नहीं करा पाए नीचे के कोर्टों में। तो ये सौभाग्य होता है, ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये तरीका होता है जस्टिस डिस्पेंसेशन का। तो आपके अगर दिल दिमाग में आपका मानस ऐसा है जहां आपको न्याय करने की इच्छा शक्ति है, तो आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, यू फाइंड द वेज फॉर डिस्पेंसिंग जस्टिस। वैसे जस्टिस के बारे में अगर मैं कहूं आपको, तो आपने भी शेखर साहब पहले शुरू में कहा कि this is one of the most toughest job, and justice itself is the term which is never so properly or fully defined. I quote here Lord Denning, who is one of the famous English judge of Court of Appeals, and who all we lawyers and judges get the opportunity to read. He answers what is justice in these words. For your just reference, I would like to read. Because why it is so undefined, why it is deliberately left vague. You can't bind this in the four corners of anything. The Lord Denning says, no other question has been discussed so passionately. No other question has caused so much precious blood and so many bitter tears to shed. No other question has been object of so much intensive thinking by most illustrious from Plato to Kant. And yet, this question is today as unanswered as it ever was. It seems that it is one of those questions to which the resigned wisdom applies, that man cannot find a definitive answer, but can only try to improve the question. So how beautifully a very learned judge says that you can't define what is justice. It is always on the set of facts before you. When you decide what is what, then you can stress something to something and then deliver it as a justice. मैंने 30-40 मिनट से ज्यादा करीब समय ले लिया है और बहुत ज्यादा मैं कहना भी नहीं चाहता, पर जो भी मैंने कहा है मैं एक धन्यवाद और देना चाहूंगा टाटिया साहब के अलावा भी। मुझे नवरत्न जी मेहता साहब का एक बहुत सुंदर नोट प्राप्त भी हुआ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप चरित्र ध्यान दर्शन पे सम्यक चरित्र पे कुछ नोट भेजिए। बहुत सुंदर सा नोट भेजा, उसमें से कुछ मैंने सकारात्मक सोच के बारे में कवर भी कर लिया। पर एक मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारी जो होड़ होती है, जो कंपटीशन होता है, वो एक प्रिंसिपल आचार्य तुलसी ने जो कहा वो भी मैंने कुछ पढ़ा। वो 2 शब्दों में सिर्फ, अकड़म करिस्सामी, मैं ऐसा करूंगा जैसा किसी ने आज तक किया नहीं, मैं ऐसा कर जाऊंगा जो बस टॉप पे पहुंच जाऊंगा। तो ये जो हमारी कंपटीशन की भावना है, ह्यूमरस सेंस में हम लोग मारवाड़ी में इसको ये भी कहते हैं कि होड़ा होड़ गोड़ा फोड़। आप अगर होड़ में लग जाएंगे तो आपके घुटने टूट जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गिरेंगे। तो ये जो सारी फीलिंग्स है सम्यक बात की, राइट, जस्टिस, जस्ट आइस, जस्टिस इज जस्टिस, जस्ट मीन्स राइट। So what you can deliver is a right thing. That is the question of determination. Though it is an undefined world, but what facts and circumstances call upon you to decide. If you can decide as a person, not as a court of law or court of justice, as a person, then you are doing justice.
हमें इन शब्दों के साथ मैं अपना कंक्लूड करना चाहूंगा कि बहुत जरूरत है हमें जैन समाज को फैलाने की, आगे बढ़ाने की, इनके प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने की। अपने अपने क्षेत्र में जो आप कर सकें एक्सेल करें, अच्छा करें। और अगेन आई वुड से एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड काम करें जो हमारे समाज के प्रतीकों को, चिन्हों को, टेनेट्स को बहुत आगे तक ले जा सके। शायद हम कलयुग में जो धरती पर नरक आने वाला है या है, उससे बच सकें और अपनी योनि को, अपने पुनर्जन्म को सुधार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका, मुझे ये मौका दिया आपने, बहुत पेशेंटली सुना। जनरली हमको पेशेंटली सुनना पड़ता है, पर अगर ऑडियंस हमको पेशेंटली सुन लेती है तो इससे ज्यादा आनंद की कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना कन्वे किया आगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कोथारी सर, थैंक यू वेरी मच. We have a few questions. We have Mr. J.K. Singhi requesting us to opine whether judiciary is unproductive, why judiciary is unproductive, and it is a main pillar of governance to absorb the shocks. Any thoughts on that? Whether the judiciary is unproductive? I would only say, I said unproductive in not any demeaning manner. It is highly respectable, but to begin with, it ideally speaking, it was not necessary. It starts as producing justice and law where it is used, put to use. But then, ideally speaking, it was not necessary in an ideal society. Unfortunately, as you know, Correct. none of us can be in ideal situation. We are never perfect. Human being is not perfect by definition. Therefore, it is unproductive in that sense, not that it is not respectful. It deserves its respect and it earns its respect. That's what I like to say. I totally agree. I think we at times do think of that why do you require a referee in a football match or an umpire in a cricket match? But you do realize that since the two teams or two players don't come to a conclusion, you do require a neutral person who is able to probably decide for them. Yes. I picked up the point of 99% things arising more on account of ego versus the real matters and the real challenges. And I guess the way we have been brought up with Gyan Darshan Charitra, hopefully I think it addresses ego at the maximum level. Yes. Another question, I think, which comes from Bhageshri Ji Lodha is how to explain to the current generation and upcoming generations that career can be built in whatever field, but along with the same, Jainism can be followed and not following along with the wrong direction or wrong path. तो उनका कहने का मतलब ये है कि Jainism and career are not exclusive. It can be done together. I guess that's what I get from her. Surely. There is no doubt about that. When I say we should follow Jainism or Jain's principles, I don't mean that you sit at home and sit at temple or sthanak only and follow Jainism. You have to request is that I think if you can explain to the current generation, how do we explain to the current generation? Yes. I guess you all understand. How do you explain to current generation? The responsibility of bringing up the current generation on those principles is essentially of the parents and elders in the family. And then education, those who are imparting you education on the other side. But then if you don't have any infrastructure in your home, you don't talk about religion, you don't talk about principles, parents don't spend time with their children, which is a major problem these days. Parents are themselves so busy that they would leave their kids in the care of the peons and servants, the beginners, the toddlers, and even younger generation. You will be so busy on mobile, we see all kinds of jokes. So it is high time that the parents spend their time talking good, explaining them good behavior, good tenets, Jainism principles. They take them to places where the Jain sadhus are giving some pravachan, etc. They see something recorded online at home, and they themselves maintain their own character in that manner, because children always follow what their parents display at home. So you can be ideal in your own home. You can impart that sanskar to your children. And when you make up your career also, if you are brought up in that manner, you can always follow those principles. Some of us who have achieved all these positions in the worldly affairs have made their careers. We have not deviated. The God has been kind, our parents were kind. They kept us back, stuck to our own principles.
And that is why perhaps the fruits of that achievement you can really enjoy. Otherwise, if you are deviated from those principles, even if you achieve something in career, perhaps the peace will not be with you. So therefore, I think not only a person concerned from his beginning of the career or education can be groomed by the parents, but others around him. That is why I talked about it, that the education we have to spread with these principles so that surroundings become that kind of atmosphere or environment. Thank So you. it is absolutely possible. It's absolutely possible. No, thank you very much. And I do totally agree that if you are able to educate more people, not necessarily limited only to religion, Yes. the entire perspective changes. When the Yes. perspective changes, one is able to have a better society. A better society will lead to better mannerism across. Yes, yes. So from here on, I think I'll move to after Dr. Vinod Surana, I think, who is with us. I think pleasure to have you, Vinod Surana Saab. Surana Saab is a partner and CEO of Surana and Surana International Attorneys based out of Chennai. It's a firm, international reputed firm, ranked among the top law firms in India for past 18 years, and top firm in South India. Just to tell, I think Surana Saab is LLM from Cornell Law School, US, and a graduate from the University of Madras. He has done his Bachelor of Law as well as doctorate in law from University of Madras. He's also done, I think, program of instruction for lawyers at Harvard Law School, US. An eminent speaker and has spoken across, whether it is the London School of Economics, IIM Bangalore, IIM Ahmedabad, ISB Hyderabad, a fellow at the Salzburg seminar, as well as invited to a noted overseas technical seminars, good associations, and I think I can go on in terms of what he is. Yuva Pratibha, Vishwa Yuva Ratna title in 2020, Best Lawyer of the Year in International Law Award in 2018. So with so many laurels and holding a lot of prestigious positions, be it FICCI, be it SOCHM, be it CII, or a National Governing Council on Indo-French Chambers, or All India Manufacturers Organization. I can go on that. That's what Mr. Surana is there for us. Traveled to almost, I think, 50 plus countries, been over there, authored to probably 20 odd books is what I think Mr. Surana is with us. Vinodji, I think it will be a pleasure to hear you, and I think all the professionals would eagerly wait, I think, to hear a few words from you. Over to you, sir. Jai Jinendra. My humble greetings to the Ratnas, the Jain professionals among the Ratna Sangh. I am grateful to Shri Shekhar Ji Bhandari, the convener of the forum, for his very kind words of introduction. It is a great honor for me to be on the same panel as Honorable Justice Vineet Kothari Ji, a very powerful speaker, but I believe that his life speaks louder than his words. Justice Kothari has had a lot of lessons learned through his struggles in early life, his growing up as a part of a large, loving, religious family, his strict daily discipline, be it his day-to-day work as a judge, be it his spiritual practices, all these facets of his life speak louder than his words. One thing which I believe I should mention here is, in my knowledge, he is the only judge in India to be a chartered accountant, a company secretary, an advocate,
an LLM gold medalist, and a doctorate. So it is a great honor for me to be here. As lawyers, we have had the opportunity to read his judgments. There is neither fear nor favor. Honorable Justice Kothari was speaking about Lord Denning, a very, very famous British judge who was known for communicating the most complex thoughts in a very simple manner. And Justice Kothari mentioned that Lord Denning said, it is very difficult to define justice. We have spent ages in our pursuit of justice, that which cannot be defined but can be perceived by all. There are 5 points from Justice Kothari's talk which I would like to repeat, because they say repetition is the mother of all learning. The first point he made, which appealed to me, was the difference between justice and law. I am reminded of an incident. As a child, I used to spend time with a retired High Court judge by the name Justice Krishnaswamy Reddyar, a very famous judge of the Madras High Court. And he would say, he gave an example, like Justice Kothari gave an example of the insurance case where the crippled child got 10 lakhs immediately and got relief. Justice Reddyar gave an example where, because of his upbringing and his value system, as a High Court judge, he was able to convince a person who had committed murder of a poor farm worker to pay 2 lakh rupees to the family, to the wife of that poor man, and then in open court reduced the sentence from death to life imprisonment. A judge's job is very difficult. You have a lot of evidence. You have to go through it. You have to uphold the law and do justice. He made the point that you do uphold the law, then one of the parties goes away sad. But when you do justice, you bring peace and happiness between the parties. He spoke about conflict management and the ability to coexist, to take people along. And for this, he spoke about the importance of scattered Jain diamonds to be brought together into a necklace so that we are able to make a greater positive impact on our society. I am reminded of a few lines which my father often sings. He says, Jago Jaini suno baatein, pade kyun ho vyarth bedam, japo yah mantra hardam, hamare tum, tumhare hum. He made a very important point about the importance of unity and the necessity for Jains to come together. It is very, very important and vital that Jains play a greater role in education and health. We have to serve the society, and through our service to the society, we have to take forward our Sanskriti. I am reminded of a saying which says, माँ के गर्भ के साथ साथ बच्चा एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है.
So Justice Kothari made a very important point that we have to inculcate our values among our children. The foundation of values must be given to our children. Respect for women was another important point he made. Then he made a point of detachment mindset. Why is it important? And how, by having a detached mindset, we can go about our daily life without committing wrongs. Of course, he gave us through stories, real life anecdotes, through his experiences as a judge and as an advocate, how he was able to practice his virtues and values. After all, they say that Jain Dharam is a Achar Pradhan Dharam and not a Prachar Pradhan Dharam. The point he made that all disputes are 1% dispute and 99% ego has really got embedded in my mind. Suppose we are able to let go, then the world will be a much friendlier and better place to live. I am reminded the ashram in Aghas, Srimad Rajchandra Ashram. I am told at the entrance there is a inscription which says, forgiveness is the gateway to heaven. So if we are able to forgive, 99% of the dispute is already solved because the ego is gone. Something which Justice said, it is easy to understand but difficult to imbibe in our life. He said, Karuna must be the basis for our actions. And if we have Karuna as the basis of our actions, we will be able to live a much better life. And finally, the most important point which I believe he made and which I think I will from today practice to a greater extent is to spend more time with my family. Our teachers say that our children learn more by watching the parents than by hearing and understanding. So I would like to spend more time with my family, and I would like to, I would like to see that I spend more quality time. I get less irritated, I get less angry, and I spend more happy time with my family. And as they say, Sudhre Vyakti, Samaj Vyakti se Rashtra Swayam Sudhrega. So I hope by my spending more quality time with my family, the nation will be a better place. So I am very grateful for having been part of this program. I have learnt a lot today. I have made a lot of notes. And as I said earlier, repetition is the mother of all learning. So I will read these notes again and again to imbibe these lessons in myself. I would also like to acknowledge the presence of Honorable Justice Tatia, Prakashji Tatia, who is the president of the Ratna Sangh, a very learned person, who was the former Chief Justice of the Jharkhand High Court, a former chairman of the Armed Forces Tribunal, a former chairman of the Human Rights Commission, among many other contributions to the society. I have had the occasion to hear Honorable Justice Tatia on several occasions. I must say that both our judges today have the ability to connect with the audience. Their language is simple. Their anecdotes and stories we are able to relate to. So with those few words, I thank you for the opportunity. It has been a great learning experience for me. Jai Jinendra. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद Vinodji. Very nicely summed up, and my learnings are very, very similar, and takeaways are very, very similar. And I hope the same thing happens with all our fellow colleagues. I would like to thank each one for attending and being present over here. It's a real pleasure for us to bring this to all of you, and we would continue a similar part
next month. I think last Sunday is what I think we will always aim for, to have new, varied, different thoughts. Today was a thought of Charitra and Charitra, and Kothari ji explained us very, very well through his decisions, I think, where it went in. It never ever, I think he compromised on the justice part, but when the Corona picture came in, I guess it was a very, very balanced thought which was implemented. At never ever it was extraction of any amounts and etc., except where the people who were supposed to give should have given, and a child who has probably lost his life need to have some compensation. Not, I think it is not a replacement, but that Karuna factor brings in a significant amount of thought. And his wider perspective on education and health, I guess, is the epitome for India to become great again. Let all of us probably come together and probably listen to him and do our bit. So thank you. Thank you very much. Thank you very much to everyone. May I request you to request Honorable Justice Tatia Sahab to say a few words, his blessings to all of us. Yeah, I think it will be a pleasure. Tatia Sahab, my apologies. So Tatia Sahab, please. I have been listening to him so long, but anytime when he speaks, I learn something more. So please give him. Thank you, sir. I am audible, sir? Yes, sir. तीर्थंकर भगवान आचार्य श्री संत सत्यो जी, सभी श्रावक श्राविकाएं, प्रकृति और सृष्टि सबसे समाय याचना के साथ में मैं अखिल भारतीय जैन रत्न तीसरी श्रावक संघ की ओर से डॉक्टर श्री विनीत जी कोठारी साहब और डॉक्टर विनोद सुराना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री शेखर जी को आभार देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा काम करने वाले हैं, एक सहृदय, एक कमिटेड वर्कर हैं, जो सिर्फ धन्यवाद से कभी भी जो है संतुष्ट नहीं होकर स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। इनकी टीम का बहुत आभार है रत्न संघ की ओर से। मुझे, चूंकि मैं जानता हूं कि समय का बहुत महत्व है और समय हो चुका है, और मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा शेखर जी आपकी अनुमति से, क्योंकि आज मेरे छोटे भ्राता विनीत जी कोठारी साहब यहाँ विराजे हैं और विनोद सुरान जो भी मेरे चेन्नई में होस्ट रहते हैं, तो इसलिए मैं इनका आभार तो प्रकट करना बहुत ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, विनीत कोठारी साहब ने एक बात कही थी कि जैन धर्म को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। मैं इस संबंध में ये कहना जरूर चाहूँगा कि शिक्षा और ज्ञान 2 क्षेत्र अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है। ज्ञान और शिक्षा में फर्क नहीं समझने की परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, और ज्ञान और शिक्षा में जो फर्क है वह है धर्म और व्यवहारिकता में। जब धर्म है, ज्ञान है, और ज्ञान का महत्व क्या है, ये आपके द्वारा आज के लिए रखा गया टॉपिक ज्ञान, चरित्र, तप और दर्शन में सर्वप्रथम आया ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं है, चरित्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चरित्र का ज्ञान होना चाहिए। और जब चरित्र है और ज्ञान है, तब ही कोई व्यक्ति तप कर सकता है, और जब तप कर सकता है तब भी उसको दर्शन हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता है। अतः आज विचार करने का विषय यह है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो विनीत कोठारी साहब ने ध्यान दिलाया हमारा सबकी, और ध्यान दिलाया है, रत्न संघ का भी ध्यान दिलाया है कि आज हमें ज्ञान की तरफ ध्यान देना होगा। चरित्र की तरफ ध्यान देने के पहले ज्ञान की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि विनीत कोठारी साहब द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के कई अनुभव भी दिए, और विनोद सुराना साहब ने भी आपको उसके संबंध में विस्तार से बताया जो कोठारी साहब ने बताया। मैंने मेरे जीवन में जो कुछ देखा है, मैं विनीत कोठारी साहब को आप बताना चाहूंगा आज, और आपके वेबिनार के द्वारा भी, कि मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो मेरी वकालत का प्रोफेशन, उसके बाद में जस्टिस, और उसके बाद में चीफ जस्टिस से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिल गया कि मैं न्यायपालिका में एक स्टेट का चीफ जस्टिस, एक नेशनल ट्रिब्यूनल का चेयरमैन हो गया, और उसके बाद में सबसे ज्यादा अनुभव का क्षेत्र जो था मेरा इन सबसे ऊपर, और वो था मेरा मानव अधिकार आयोग, जहाँ की स्थिति के बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि न्यायपालिका को कोई ध्यान नहीं। मेरे साथ में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो हाईएस्ट ऑफिसर्स जब बैठते थे,
वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स और वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स और वाइस चीफ ऑफ आर्मी तक बैठते थे। उनका कथन था, अगर हमने न्यायपालिका रूप नहीं देखा होता तो हमारी जिंदगी अधूरी थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मानव अधिकार आयोग में अगर नहीं आया होता तो मेरी जिंदगी व्यर्थ थी। अच्छा, इतना जबरदस्त मेरे को अनुभव हुआ है जो ये मानव अधिकार में हुआ है। और इसलिए जब ज्ञान और चरित्र की बात तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि आज हमने सब चॉइस में छोड़ रखा है, वो ज्ञान और चरित्र को चॉइस में छोड़ रखा है। कभी अवसर हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञान और चरित्र को चॉइस में छोड़ने के लिए ऐसा कोई सृष्टि पे व्यक्ति या मानव शरीर धारण किया कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ज्ञान और चरित्र के साथ में कंप्रोमाइज नहीं किया। ये सारा अनुभव जब होता है जब आप न्यायपालिका से बाहर आते हैं, क्योंकि न्यायपालिका में जब तक है तब तक आपको ये सारी कठिनाई का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। मैं आपको पुनः कहूंगा, थोड़ा किसी को बुरा लगे तो लगे कि मैं पुनः दोहराऊंगा कि मैं जज था, 25 साल तक वकालत की मैंने, ट्रायल कोर्ट से लगाकर ओपन कोर्ट तक की है, उसके बाद में जज रहा, उसके बाद में चीफ जस्टिस रहा, उसके बाद आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहा, उसके बाद में मानव अधिकार आयोग का मैं रहा हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ, ज्ञान और चरित्र की बात करना है तो पहले मानव के बारे में जानना जरूरी है और आज की शिक्षा को जानना जरूरी है और आज की शिक्षा से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र, धर्म क्षेत्र तक भी इसमें बहुत बड़े दोष के भागीदारी बनते हैं। कारण ये कि जहाँ कभी भी चरित्र की बात आई है हर जगह कंप्रोमाइज हुआ। समय कम होने के कारण से मैं विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड रहे कि मेरे द्वारा ये कहा गया है और ये आपत्ति दर्ज की गई है। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जाने से आप मंगल दान पे जा सकते हो, लेकिन जो व्यक्तियों के साथ घटित हो रहा है, जो इंसानों के साथ घटित हो रहा है, और उसका कारण है ज्ञान का अभाव। और ज्ञान का अभाव होगा तो चरित्र भी नहीं रह सकता है, न आपका तप हो सकता है, न दर्शन हो सकता है, न देश हो सकता है, न समाज हो सकता है, न परिवार रह सकता है। ज्ञान के अभाव में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे आज क्षमा चाहता हूं कि ये विषय जो है, इस विषय पर मैंने एनक्रोचमेंट किया, क्योंकि मेरा सिर्फ धन्यवाद का से ज्यादा का कुछ इसमें रोल नहीं था। मैं श्री शेखर जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, श्री विनीत कोठारी साहब का, श्री विनोद सुराना का, और आज के इस कार्यक्रम के जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सबका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अखिल भारतीय जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा याचना पुनः। मान्यवर, आपने हमने सिर्फ अंगूठी बनाई थी सोने की, हीरे की जगह खाली थी, आपने हीरा रख दिया वहां पे। बहुत बहुत नमन आपको, धन्यवाद। और संवत्सरी के अवसर पर मैं वापिस मिच्छामि दुक्कडम और खमत कामना सभी को करता हूँ। रह गया था। थैंक यू, थैंक यू, everyone. Thank you, Tatya Sahab. Thank you very much. It was such a pleasure. Thank you.